ग्राफिक को देखें नवीन, तो वहां पता चलता है कि किस टीम की कैसी जर्नी रही है। पलनी टस्कर्स जहां पर पहले खेला था चोला के साथ, वहां पर उन्होंने जीत प्राप्त की, क्वालिफायर नंबर 6 पर पहुंचे। उसके बाद नवीन थोड़ा सा वहां पर पलटा था पासा। Yeah, totally. Because see, I am more impressed with the way Aravali Arrows have actually learned how to win, where to win, which match to win, and how to win by saying, putting out that dominating effect on the opposition. That is how they have gone in. And as I said, without the coach, without only Lokesh Gosalia being the captain, now Kapil Gurjar has come in, but Lokesh Gosalia now needs to manage Kapil Gurjar also in the defense. So with all those hurdles, this team, the Aravali Arrows, has just given a very clear example of how to play and which situations, how to actually acclimatize yourself and play according to the situation. That is what it is. But I'm really very unhappy, or rather disappointed, with the way Chola Veerans actually went out on this CARS24 Yuva Kabaddi series in the summit round. See, coming in second in the summit round, they had ample choices. They have empty number of choices, but then what they have done is they've just emptied their tank, they've emptied their aggression. Though they've just gone back without even putting out a fight, which was very, very disappointing. So, two teams, Arshit. One team showing how to play, one team showing how not to play. That's what it is. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर आप मुरथल मैग्नेट्स की बात करें, क्वालिफायर नंबर 1-3 वहां पर जीतकर लगातार वहां पर अच्छा खेलती हुई नजर आई। पिछले अगर कई मैचेस की बात करें तो सिर्फ एक ही मुकाबला वो हारी थी क्वालिफायर में चोला वीरन्स के विरुद्ध, और अब पहुंच चुकी है एलिमिनेटर 6 में, यानी कि नवीन वर्चुअल सेमीफाइनल में। जो जीतेगा फाइनल में खेलेगा अरावली एरोज के विरुद्ध। तो ये था आप सभी के समक्ष रोड टू फाइनल्स का ग्राफिक्स। अब बात करते हैं नवीन इस एलिमिनेटर 6 की अहम भूमिका की। तो और हमारे दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि आज एक ही मुकाबला यहां पर होने वाला है, जो खेला जाएगा दो बड़ी टीमों के मध्य। दोनों ही टीमें जो चैंपियंस कहलाती हैं, और दोनों ही टीमें एक बार की चैंपियन भी रही है। पलनी टस्कर्स डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और हमारे इनॉग्रल चैंपियंस मुरथल मैग्नेट्स। Yeah, I think they will want to go away with the inaugural champions tag. That is what they will want to actually delete off, because we've been calling them inaugural champions, but that's long gone. I think now they want something else. Now they will be wanting to go to the finals and also, of course, face the Aravali Arrows there. But they have a big mountain to climb. It's not just a small wall, it's a mountain. They'll have to come over that. And yeah, that's not going to be very easy. And it's not going to be impossible also. Because Murthal Magnets and Rajkumar, the coach, they know how to play and how to get used to every situation of the match. I'm sure they will put up a good fight, that's for sure. जी हाँ, दोनों ही टीमों के साथ साथ दोनों ही कोचेस बड़ा ही कमाल है, अनुभवी कोचेस वहां पर आपको नजर आते हैं। और आज एक ही मुकाबला खेले जाने वाला है, वो होगा एलिमिनेटर 6। आइए आप सभी को समझाते हैं। पलनी टस्कर्स बना मुरथल मैग्नेट्स। दोनों ही टीमों की एक अपनी अलग जर्नी रही है, दोनों ही टीमों ने अपना अलग कमाल दिखलाया है। और अब कमाल के पश्चात जो आज ऑन मैच अच्छा खेल पाएगा नवीन, सारी पिछली बातों को आप छोड़ दीजिए। जो आज मैच अच्छा खेलेगा, जिसके लिए आज दिन अच्छा बना पाएगी, शायद वो टीम अपना जीत नाम कर जाएगी। Yeah, absolutely. See, we said it's a virtual semi-finals, but I'll tell you what, this is the third place game also. I know if you lose, you get the bronze. You don't want to be on the third place, isn't it? You want to go at least into the finals, be a runners-up of the CARS24 YKS Monsoon edition. If that is not happening, then whatever the journey you have started to play from the entire month, in the previous month as well, that's going to go waste, isn't it? This one match, this 40 minutes, that is what is there in your hand. I'm like sounding like a little bit of SRK. 40 minute है आपके हाथ में. And of course Rajkumar and of course Rajaram will be saying the same thing. See, this 40 minutes, Arshit, actually will decide whether you go for the bronze or silver. That's what it is. Or rather go to the gold as well. That's an opportunity for all three. जी हाँ, तो आज एलिक्सिर का काम कौन कर पाएगा, यानी कि कौन वहां पर अमृत की धारा बरसा पाएगा और अपनी टीम में वहां पर जीत प्राप्त करा पाएगा। बट नवीन, पिछली जर्नी को अगर देखते हुए अगर हम दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ की बात करें, आशा करेंगे हमारे दर्शकों को ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे दोनों ही टीमों की कैसी जर्नी रही CARS24 YKS के इस मॉनसून एडिशन में, और साथ ही साथ दोनों ही टीमों की कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है। नवीन, तो शुरू करते हैं पलनी टस्कर्स के साथ। डिफेंडिंग चैंपियंस, शुरुआत इन्होंने इतनी कमाल की सिर्फ 3 मुकाबले वहां पर हारे हैं, जिसमें 2 अरावली के विरुद्ध, 1 मुरथल के विरुद्ध। Yeah, because see, that time, 2 coaches were there, Ilavarasan and Karnan. They knew the players even well as the strengths, if you speak of. All those matches that they lost, Arshit, was all because of their Raiders. What's their Raiders? They did the humongous job of going out there and getting all those raid points. The bulk of the scoring, the bulk of the responsibility was all on the Raiders, especially Vishwa Asalavan and also Dharnidharan Kandasamy. And even without Marimuthu Selvam, who was a star in the previous edition in Mysuru, even without him, of course he's there in the team, but even without him performing well, the Raiders did well. Then came in Dinesh Krishnamurthy, then came in Ilantendra Ilanjelian, and all of them contributed. And I wonder what actually goes wrong with them, with the Aravali Arrows. I think, Harshit, you know what?
they come with a set plan. That is what Palani Tuskers are actually doing, is what I feel. Because yesterday even I was thinking about it after the match as well, and I was also speaking to Rajaram a little. So I generally asked him, what happened? He said, we went with a plan, that plan didn't work out. See, in live sport, on the live mat, what happens is you need to have multiple plans. Yeah. If you don't have multiple plans, then you are not falling back on anything. As we all know, plan B is to make plan A work. Yeah. But when plan A doesn't work, you need to have a plan C. Yeah. Now, that is what the Palani Tuskers did not have. And 2 matches, what they lost with the Aravali Arrows, both the times you can't say Raiders were not doing well. I mean, how is that even possible? See, the defense has its errors. But both the matches, what they lost against the Aravali is because of their Raiders not performing well. Yeah. पिछले कई मैचेस में जरूर पिछले मैच में विश्वा ने अच्छा किया, आशा करेंगे आज वो अच्छा खेले, बट नवीन पिछले मैच में अरावली एरोज के विरुद्ध ये कमजोरी नजर आई थी कि शक्तिवेल, तमिलरसन, अरुण कुमार जो कि टॉप 3 डिफेंडर्स हैं, उन्हें मिलाकर सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स मिले। और यहाँ आप दर्शक को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो छोटी छोटी चूक हुई और रोहित यादव की कैसे एक्सीलेंस रही। नवीन, क्या यहाँ पर शक्तिवेल को राइट कॉर्नर खिलाना नवीन सही साबित हो सकता है, क्योंकि कल रोहित यादव ने उन्हें बहुत ज्यादा वहां पर शिकार बनाया। Yeah, Arshid, that discussion with Rajaram also gave us a lot of talk and also a little bit of an insight what is happening with the team. Damodaran, Damu they call him, Damodaran Ravikumar on that right corner is not confident. He is not confident of playing the right corner. And he himself says that. See, that is why we're watching all these weaknesses. Look at the Raiders, how they are actually going in and getting tackled out. That's a big weakness. And yes, in the defense, there is weakness when Damodaran Ravikumar is not playing. And when Damodaran does not play, you will have to put in Shaktivel Thangavelu from the left corner to right corner where he is not comfortable. Point number 1. And point 2, when you don't have Ajay Mutaya. Yeah. You did not have Ajay Mutaya when they lost against the Aravali Arrows in the first match because he was injured against the Chola Virans. So when you don't have Ajay Mutaya, again there's a problem. So today, my right corner worries will be more than any other defense of the Palani Tuskers. And of course, the Raiders, they have to fire. No other go. जी हाँ बिल्कुल। और आज आपने रीडर्स की बात की, दामोदरन वहां पर आपको राइट कॉर्नर पर क्या आज खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर क्या धरनीधरन को आज शुरुआती साथ में मौका मिल सकता है? नवीन, जरूर विश्वा ने थोड़ा सा विश्वास वहां पर टीम को दिलाया, पिछले मैच में 7 या फिर 8 रेड पॉइंट्स वहां पर प्राप्त किए, बट विश्वा के साथ साथ क्या धरनीधरन वहां पर हो सकते हैं? क्या एलन तेंद्रल होंगे? क्या दिनेश कुमार, कृष्णा मूर्ति होंगे? क्योंकि इनके पास रेडर्स की भरमार जरूर। नवीन, आपको बेंच पर सिद्धू सिगाना भी नजर आते हैं। Arshid, see, we need to target Sonu Rati today. So, if Palani Tuskers are really looking at Sonu Rati because he's the top defender, what they'll have to do is, point number 1, they'll have to ask Marimuthu Selvam to start off. I will say Marimuthu to start off because he's the right raider. And Sonu Rati can go against the right raider from that left corner. But when the left raider starts, say Vishwas Lavan or Dharnidharan Kandasamy, Sonu Rati is very good in those dashes. Yeah. He's very, very good in those frontal blocks. And when he does that, the right corner also gets a lot of support. Rahul Rati is standing out there, so he will get a lot of support. So now, for the Palani Tuskers' Raiders, if they can target Sonu Rati, because their covers has not performed that very well. Comparatively, the covers are weak. And why I say Marimuthu Selvam is because he's good in attacking the covers. He needs to spread his wings. He needs to open his arms a bit. He needs to go out there, attack the covers. When he does that, then they can get some points and not against Sonu Rati. जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर हम मेटिकुलसली से टैक्टिक्स को देखें तो थोड़े से बोनस की भी और आवश्यकता होगी कि आप डू और डायरेक्ट को आगे की तरफ वहां पर धकेल पाए, क्योंकि आप जितना ज्यादा समय तक कोर्ट पर रहेंगे, खासकर आपके बड़े रेडर्स, उतना ही मौका आपको ज्यादा मिलेगा। पर नवीन, अभी तो हमने बात की थी पल्ली टस्कर्स की, मुरथल की ऑलरेडी वैसे बहुत सारी बातें कर चुके, बट इनकी स्ट्रेंथ में बात करें तो फिर से वो दो रेडर्स आपको जो नजर आते हैं। अंकित चारवा पिछले मैच में खेले, मिलन दहिया ने मिलकर उन दोनों ने 32 रेड पॉइंट्स नवीन प्राप्त किए और फिर से त्रिमूर्ति कमाल कर रही है। Oh God, that match yesterday was just mind-boggling, isn't it? Ankit Sharma and Milan Dhaya, and of course along with him Rohit Rati. So all these 3 Raiders will once again come against the defense of the Palani Tuskers as they did against the Chola Virans yesterday. And look at the way how Ankit Sharma actually disturbs the entire defense. And today, if you don't have a proper right corner, look at all the problems that's going to happen. And today, Thamilarasan Kalasamy will be tested on that left corner because Thamilarasan, we know, has done very well. All 3 are right raiders, by the way. Milan Dhaya, Rohit Rati and Ankit Sharma. All 3 are right raiders. So watch out, where Thamilarasan Kalasamy will be there. Rohit Rati, of course, will come in with a difference of another left raider concept. But then, speak of their strength in the defense as well. Look at this. This is what I said. Sonu Rati is very, very strong.
even before we saw those visuals, we just spoke of Sonu Rati because yes, he's the top defender on this CARS24 YKS Monsoon edition. But if you are not having, in terms of the defense of the Palani Tuskers, if you really want to stop Ankit Sharma or Rohit Rati, first of all, Ajay Muthaiya, he needs to manage the defense very nicely. They need to play end-line defense and try and protect the bonus if possible, because Rohit Rati is very good in stealing the bonus points. If you can't steal the bonus points, don't give away an extra point. That's what you will have to do. Or else, the Murthal Magnets, they will get that momentum with the raids and they'll keep on piling the raid points. जी, और सोनू राठी की हमने बात की, उनका ऑन एन एवरेज नवीन की वो 4.5 टैकल पॉइंट्स हर मुकाबले से प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो हाई फाई के बड़े करीब है, और साथ ही साथ 91 टैकल पॉइंट्स वो प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी सीजन में। अगर कहीं आज पलनी के डिफेंडर्स उनके आके चढ़ गए, रेडर्स उनके आते पे चढ़ गए, तो वो डिफेंडर हो सकते हैं एक और बड़े कमाल के। पर अब अगर आप बात करें नवीन, कहाँ वीकनेस नजर आती है मुरथल मैग्नेट्स की? पिछली बार बहुत ही अच्छा उन्होंने अपोज किया, पिछली बार लगातार अपने मोमेंटम को बनाए रखा, बट मयंक सैनी और रोहित राठी को अभी भी थोड़ा सा और स्टेप अप करने की आवश्यकता है एज अ रेडर्स, क्योंकि डिफेंस जो है पलनी का बहुत स्ट्रांग नजर आता है। Yeah, see, this is all on the momentum lines, you know, just watching out on those momentum lines is okay, you know, because Rohit Rati, as I said, is a left raider only there, so he will be going against the right corner, which is kind of weak for the Palani Tuskers, but Ankit Sharma and Milan Dhaya coming out on that right flank and attacking the left corner, so what they'll have to do, I don't see much of a problem in the raiding department of the Murthal Magnets. They have very good trio of raiding. And also they can bring in that raider from the bench as well. One raider who can come in and also score some points, which is good. But having said that, their covers is the weakest spot for me. Yeah. Not their raiders in the defense line. Their covers is a big, big, weak spot. And if the Palani Tuskers Raiders can actually target that, then it'll be something else. That's what I just said. You know, Marimuthu Selvam, he needs to attack the covers. He needs to open up his arms. He needs to attack the covers. That's the only weak spot. If that is strong, then nobody is stopping Murthal Magnets to go through to the finals is what I feel. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो पल्ली के लिए यहाँ पर जीत का सूत्र ये हो सकता है कि सोनू राठी को डिफेंस में जितना आप दूर करें, उतने ही रेडर्स आपके लिए रॉकेट फायर करते हुए पॉइंट्स ला सकते हैं। पर टैक्टिक्स की बात करें मुरथल मैग्नेट्स के लिए नवीन, तो डिफेंस, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कवर्स जो है वो थोड़ा सा वीक वहां पर नजर आता है, अगर आसान सा पॉइंट नहीं दे पल्ली टस्कर्स के रेडर्स को, तो इस मैच में जरूर जान अतिरिक्त भर जाएगी। Yeah, definitely, because see, I'll tell you something, the bonus is out of the question, because you can't go near Sonu Rati, you can't go near Rahul Rati on both the corners. You cannot get a bonus in those corners. So that is out of the question. And the covers, the only problem is when the raider comes to attack you, you need to be ready. That's what it is for the Murthal Magnets, or else nothing else will work out to strengthen those covers. If you're talking about strengthening those covers, and especially against Ilan Tendril and Dinesh Kumar, see, this is what I think the weakness of the Palani Tuskers is all about. The Raiders are actually going in against the right corner. So today, you know, more than Sonu Rati, Rahul Rati will be questioned in that right corner if he is in the starting 7. So that is what it is. And all the left raiders coming towards you. So the only small gap is Marimuthu playing well today. जी हाँ, बहुत ही बड़ा निर्भर वहां पर करेगा मारीमुथु पर कि कैसे आज का जो मुकाबला है वो यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए आगे बढ़ेगा। और इन दृश्यों में हम देख रहे हैं नवीन कि किस तरह से विश्वा, अजय और दिनेश को लगातार बाहर रखने की आवश्यकता है, और जहां पर पलनी का थोड़ा सा वीक अटैम्प्ट आपको नजर आता है, आप उनके ऊपर वहां पर काम कर सकते हैं। बट ये दोनों ही टीमें नवीन निश्चित तौर पर ये भी देखिए वो डैश के लिए जाना चाहते हैं तमिल रसन। Yeah, see, when you saw those footage on the visuals, what happened? It was Arjun Rati, left raider and the right corner problem. Very simple. Damodaran Ravi Kumar, again, not very confident. So Saktivel Tangavelu is playing on that right corner. So there is the problem. All those 2 points you saw, and the weakness in defense is all against the left raiders. So Rohit Rati has a better chance today. You know, we all like Ankit Sharma and Milan Dhaya getting points, but today Rohit Rati can be the game changer because he's that left raider. He can attack the right corner very nicely, and the Palani's defense is weaker on that right flank. Yeah. So if that is the problem that they need to sort out, because we don't have the team sheets yet, it'll be very nice if we could have also seen the team sheet and see and analyze it better. But you never know what is going to happen. What is Rajaram thinking on the right corner? Because he knows that there is a problem. As he told me last evening, he said, no, I have a huge problem in the right corner. I will try to segregate and separate it right. I hope he does that today.
जी, अगर बहुत ज़्यादा अंक अगर आप वहाँ से अर्जित नहीं कर पा रहे तो बहुत ज़्यादा अंक देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अंकित और जिस प्रकार से मिलन की हम बात करते हैं 50% ऑफ रेट पॉइंट्स उन्होंने राइट कॉर्नर के साथ से निकाले हैं, जरूर वो चाहे राइट रीडर हो। पर नवीन, जब इन दोनों टीमों का पिछला मुकाबला हुआ था तो कहीं ना कहीं जो आप पलटवार की बात करते हैं, पल ने उस समय बेहतरीन फॉर्म में था। मुरथल मैग्नेट्स के लिए अंकित शर्मा ने 13 रेट पॉइंट्स प्राप्त किए और उस मैच में प्रिंस कुमार बने थे सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर, 5 टैकल पॉइंट वहां पर प्राप्त करते हुए नजर आए थे। Okay, lovely. So I think we are getting into that mode where we will be going into the semi-finals very, very soon, Harshit. But yeah, here Ankit Sharma, as I said, is very, very good. And it is a revenge match here for the Murthal Magnets. Because I'll tell you, once the Murthal Magnets actually tasted that loss against the Palani Tuskers, and Palani Tuskers have tasted a loss against the Murthal Magnets. So it's 1-1. So whoever is going to win this will once again take the revenge and will go to the finals to meet the Aravali Arrows. जी हाँ, तो एक बायलेटरल सीरीज की तरह आप इसे देख लीजिए, जहां पर एक की बराबरी है। जो अब अंतिम मुकाबले में यहां पर कमाल कर जाएगा वो फाइनल्स में आप सभी को खेलता हुआ नजर आएगा अगेंस्ट अरावली एरोज। तो लीजिए, हम सभी तैयार हैं। नवीन, आर यू ऑल सेट? Almost and almost ready and always ready. तो चलिए दर्शक, आप सभी तैयार हैं तो क्यों करें इंतजार, सीधा ले चलते हैं आप सभी को इस मुकाबले की शुरुआत के साथ। पलानी बनाम मुरथल मैग्नेट, जो जीतेगा पहुंचेगा फाइनल्स में, भिड़ेगा अरावली के विरुद्ध। பார்க்கலியோ, கேட்கலியோ, ஓடலியோ, ஆனா ஜெயிக்கலியோ. ஆமா, எல்லா இடத்துலயும் லியோ 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 அப்படின்ற பேரு எல்லா இடத்துலயும் கேட்டுட்டு இருக்கு. ஆனா பாலனி டர்க்கஸ் ஜெயிக்கலியோ. ஆமா, அவங்க நேத்து ஜெயிக்கல, அதனால தான் இங்க செமி ஃபைனல்ஸ் விளையாட வந்திருக்காங்க. So this is the final frontier here for the defending champions. They need to win the semi-finals and they need to go out there and meet the Aravali Arrows. Are the Tuskers ready for this? One correct time. Can the Tuskers come out there with all vengeance? Yalai! இந்த யானைங்களுக்கு இன்னைக்கு மதம் புடிச்சிருக்கா? அத பாத்துருவோம். Let's invite the Palani Tuskers! यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैच संख्या 0131 में आपका अभिनंदन है। सर्वाइवल राउंड, समिट राउंड में आकर मैग्नेट Good morning once again and welcome for the semi-finals against the Palani Tuskers and the Murthal Magnets. The winner will go out there and meet the Aravali Arrows, and yes, the Tuskers today, have they got that vengeance? Inike madam pudichirka, that's what I asked them. If they have that vengeance, they can go out there and beat the Murthal Magnets. But what is the 7 looking like? Tamlarasan Kalasamy and Shaktivel Tangavelu on the corners. Vishwas 11, Ilantendral Ilan Jillian, and they are going with Dinesh Kumar, no Marimuthu Selvam in the starting 7. Ajay Muthaya and Arun Kumar Arumugam will be in the covers. Marimuthu, of course, will be in the substitution lines with Vijay, Manigandan Sulalmani, Sidhu Sigana and Dharni Dharan Kandasamy. Right, that is the last name on the substitution lines. So I wonder when he can come in along with the coach's decision, Rajaram. And along with me this morning for this semi-finals is नहीं चलते हैं तो कवर्स में इनके पास एक्स्ट्रा डिफेंडर आपको सब्स्टिट्यूशन में नजर नहीं आता है।
Yeah, that's what we were speaking about that in the entire pre-show, isn't it? That was the big problem for the Murthal Magnets. And I should go out there and say probably congratulations, Arjun Rati. You have won the top raider award of this CARS24 Yuva Kabaddi series already, because nobody is coming near 195. And yeah, we don't have that sort of raiders even in all the 3 teams that is left to go out there and get it. But the top 3 defenders, yeah, that is also looking very, very strong. This lad is almost there to get 100. And Lokesh Gosalia should say, okay, bye-bye top defender award. जी हाँ बिल्कुल 91 टैकल पॉइंट्स इनके पास। अगर आज ये मुकाबला जीतेंगे तो इनके पास मुकाबले 2 होंगे, अन्यथा आज के मुकाबले में इन्हें कमाल करना पड़ेगा। और सोनू राठी जितने समय तक मैट पर रहेंगे उतना बेहतर है। लोकेश और चेतन नवीन इन दोनों ने मिलकर प्रदर्शन किया है और इसीलिए अरावली एरोज वहां पर फाइनल तक पहुंची है। अक्सर मैं अरावली और पेरियार में नजर आता था कि सिर्फ लोकेश टॉप पे होते थे, उनका साथ कोई और डिफेंडर नहीं निभा रहा होता था, और इसीलिए आज वहां पर आराम से बैठी है, शायद सोफे पे बैठकर ये मुकाबला देख रहे होंगे या फिर मैदान में होंगे। यहाँ पर सोनू राठी के लिए एक अच्छी शुरुआत, टॉस जीता, टॉस जीतकर वहां पर आपको आपके क्या स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर वो नजर आएंगे। Yeah, correct. As we have the Green Initiative campaign here in the CARS24 YKS Monsoon edition. It's nice to see both the captains exchanging the saplings. Right, Ajay Mutaya back in the starting 7. Vishwa Asalavan. I also had a word with these guys after the loss yesterday. They were completely down and out. And I said, Vishwa, I don't know what you're going to do. You need to get that team up. So he said, yes, Anna, we will try and win it tomorrow against the Murthal Magnets. 75% on the rate. Strike rate is all good. But I said, Vishwa Asaradavan, he should not be shakeable today. Because if not today, then nothing else is going to happen in this edition. But against Sonu Rati, it's not very easy to be unshakable. जी हाँ बिल्कुल, इन्हें अनशेकेबल बिल्कुल प्रदर्शन वैसा ही दिखलाना होगा, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल होना होगा। 21 मुकाबलों में 91 टैकल पॉइंट्स है, टैकल स्ट्राइक रेट 60 की है। और नवीन, इनके बड़े भाई से इन्होंने कबड्डी खेलना सीखा है, जिस तरह से इनके बड़े भाई ने इन्हें सिखाया है कबड्डी के एक गुण, और बड़े छोटे हैं, बड़े युवा खिलाड़ी हैं। पर टीम कोच राजाराम बिल्कुल उसी के अपोजिट बड़े ही अनुभवी हैं और निश्चित तौर पर चाहेंगे कि आज अपनी टीम और लीजिए CARS24 युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन पेनल्टीमेट डे, और ये पेनल्टीमेट मैच जहां पर सेमीफाइनल का मुकाबला है। अरावली एरोज वहां पर सीना तान खड़ी हुई है फाइनल्स में। जो इस मुकाबले को जीतेगा वो फाइनल्स में पहुंचेगा। एक अद्भुत, अद्वितीय, विलक्षण, ऐश्वर्यशाली मुकाबले की शुरुआत का समय हो चुका है नवीन। Alright, look at that. Yes. आज का नजर आ पाएंगे। Yeah, that's what I used to call him in the previous match. I called him Ilam Puyal. That is what it is. It is a cyclone, a tufan in Hindi, of course, cyclone. But I'll tell you something. He was named Ilan Tendril by his mama. Mama is mother's brother. So that is what it is. Sonu Rati wanted to have a pursuit on Dinesh. Does not get it. So mother's first younger brother named him Ilan Tendril. And his brother's name is Tamil Tendril. So that Tendril is there in the family. And when he plays kabaddi, I didn't know this. When he plays kabaddi in his local place, in his village and all his district, he's been called Puyal. I without my knowledge, I called him Puyal because that escape of the super tackle was very nice. So that escape of the super tackle, where against the Chola Virans, what he put up was very good. So that's why I just called him Puyal. But yeah, the name is just a name if you don't perform anything. As Vishwas Lavan has come in, I think he's got more chances against Rahul Rati and against the covers. यहाँ पर अच्छा लगा कि विश्वा इस रेड पर आए, क्योंकि आप सोनू राठी के साथ साथ राहुल राठी को चेक करना चाहेंगे। और अगर कहीं वहां पर आपको ऐसा नजर आया, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको शक्तिवेल वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर नजर आ रहे हैं। अंकित ने पिछली बार तमिल अरसन को शिकार बनाया था, किक लगाई थी। क्या बचाते हैं अपने आप को नवीन, बहुत ही शानदार स्किल इनके पास ये, क्योंकि एक अच्छा डिफेंडर यही नहीं जो अच्छा अटैक करे, बल्कि एक अच्छा डिफेंडर वो भी होता है जो अपने आप को अच्छी तरह से बचाए। That is why I like Shaktivel Thangavelu in the left corner only. That is his place. He can be the dawn of that arena in that left corner. You put him in the right corner, he's struggling. That's what happened. And now do or die raid, Vishwas Lavan. First do or die raid of the semi-finals. Sonu Rati will not attack him. He will leave him to come in and then fall on his legs. 93 here for Sonu Rati. 1 point, Murthal.
क्या बात है नवीन, ये बेक ऑफ खिलाड़ी है, fearless खिलाड़ी है। जिस तरह से पहले इलन तेंदुल का शिकार बनाया था, इसके बाद विश्वा का यहाँ पर बहुत ज्यादा अंदर आ गए थे विश्वा। थोड़ा सा आपके पास 7 का डिफेंस होता है ना विपक्ष में, अब चाहते हैं कि टच पॉइंट्स लाएं, वो भी अटैक करते हुए हैंड टचेस के साथ। अब डू और डायरेक्ट यहाँ पर भी आई है, इस बार रोहित राठी लेफ्ट रेडर आए हैं, अजय मुथैया ने इस बार एंगल को कट किया। दोनों ही डिफेंस टीम का Lokesh Gosali, of course, has done it before. Ashish Malik, Gautam Murugan also has done it, and he is there. Error kick, has he attacked? Oh, yeah, the covers once again, as we spoke in the pre-show, Arshit, there. इस बार बहुत अच्छा टोटच वहां पर किया दिनेश कुमार कृष्णामूर्ति, बहुत ही अच्छा टोटच वहां पर किया। कवर्स पर अटैक करने जाएंगे जब यहाँ पर पलनी टस्कर्स तो मुर्तल को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, और दिनेश कुमार कृष्णामूर्ति को यही करना होगा कि वो कवर्स कंफ्यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ से रेड लगाने का उनके पास एक बहुत बड़ा एसेट है, उसका कैसे उपयोग करेंगे देखना बेहद जरूरी। अंकित चारवा और नवीन, एक और चीज, जब मैसूर एडिशन में हमारे साथ संजीव बालियान साहब, अश्वन कुमार साहब जुड़े थे, तो एक प्रश्न हमने उनसे पूछा था, हमारी थिंक टैंक ने, हमारी सोशल मीडिया कंटेंट ने, मैंने, कि क्यों अधिकतर अब हम भारतीय टीम में युवा प्लेयर्स को देख रहे हैं, क्यों उतने ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं बट बहुत पुराने बड़े बड़े नाम वो आपको नजर नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम युवा प्लेयर्स के साथ इसलिए ज्यादा जा रहे हैं कि वो बेक ऑफ होते हैं, फियरलेस होते हैं, उन्हें बड़े मैच का प्रेशर नहीं होता है नवीन। और वैसे ही सोनू राठी ने जो दोनों टैकल किए, खासकर सबसे पहला जो टैकल था, वो और कोई खिलाड़ी होते शायद मन में आता कि मैं जाऊं ना जाऊं, कप्तान भी हूं, डिफेंडर भी हूं, अगर मैं बाहर चला गया तो मैच इधर से उधर हो जाएगा। तो वो इफ एंड बट को छोड़कर युवा प्लेयर्स में स्पार्क नजर आता है एज अ fearless player. Yeah, totally. And yeah, you speak of Sonu Rati. He's got many names in front of him as Milan Daya tries the running hand touch. Kamlarashan should watch out. The kick might come in any time. And Ajay Muthaiya escapes right in time from the left cover. So yeah, before this, it's a monsoon edition. All right, that's nice to see. All the future Kabaddi superstars. So in the monsoon edition, Yogesh Daya and Lokesh Gosali, of course, has got they've crossed 100 tackle points. And in the last edition, in Mysuru, the summer edition, Lokesh Gosali have crossed 103. So 2 times I think Lokesh Gosali has crossed the 100 tackle points. This time he would have said, listen, I want to lift the trophy. Not just the 100 tackle points maybe, because last time in the summer edition, he could not lift the trophy. Of course, he was playing for Periyar Panthers that time. But he's got his eye on the trophy because he's already there in the finals. As do or die raid, Ankit Sharma comes in. जी अब डू और डाई रेड है, इस बार राइट कॉर्नर पीछे नहीं गए, इंतजार किया, जानते थे वहां पर वो अटैक करने आएंगे, और लीजिए कुछ वहां पर फैमिलियर फेसेस नजर आए हैं नवीन हमें। Definitely Sohail Chandok in the house. That's nice to see. Very good friend, very good mentor as well. And that right corner, yeah, there the frontal double thigh hold was good. Do or die raid as he stepped into the lobby. Yes, he has. Ilan Tendril has started to become an Ilam Puyal. He's still got time. Wants to. No, good decision. Because if he had gone in and got tackled, that would have been a super tackle. So good that he is going back. You know, after the defender stepped out into the lobby. Rahul Rati that time. जी हाँ, राहुल राठी वहां पर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए, थोड़ा सा वहां पर इम्बैलेंस्ड हो गए, जिसके चलते लॉबी में उनका राइट लेग चला गया। और इलन तेंदुल नवीन बहुत ही अच्छा काम करते हुए, अगर एक राइट रेडर राइट कॉर्नर को अटैक करने जाएंगे तो राहुल राठी एंकल होल्ड में बहुत अच्छे हैं, हमने उन्हें डबल थाई होल्ड करते हुए बहुत कम देखा है। जैसे पिछली बार शक्तिवेल ने वहां पर डबल थाई होल्ड किया था, तो अंकित और मिलन के लिए उतना आसान नहीं होगा राइट कॉर्नर से पॉइंट लेना, बट यहाँ पर अरुण की तरफ से चूक हुई, राइट कवर फ्रंटल ब्लॉक देने आए थे नवीन। And also not in the chain. You know, that is again a big problem. Look at this. He is standing with Dinesh Kumar Krishnamurthy, who is a raider who will not come for the tackle in the chain. And that was an error. And Milan Daya had all the time to go through to the midline. Ilan Tendril once again comes in. Whom will he attack? He will not go near Sonu Rati. And without his height, he will be pulled back. Sonu Rati again. Number 94. जी और प्रिंस कुमार ने जरूर टैकल इनिशिएट किया, बट समाप्त किसने किया नवीन? जिस तरह से यहाँ पर जो टॉक जारी है, कभी समाप्त ना हो, हम आशा करते हैं। बट यहाँ देखिए, प्रिंस ने एडवांस टैकल किया था, बट सोनू राठी ने आकर एंकल्स को पकड़ा, रोहित राठी ने अच्छा कमाल किया, और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बहुत अच्छा था, जिसके चलते यहाँ पर एक अंक मिला है नवीन। नेक टू नेक फाइट हो रही है यहाँ पर, 5-5। Yes, of course, he might not get that 95th tackle point. Maybe because Rahul Rati was attacked first. It was so unfair again for all the defenders not to get the finishing point of the tackle. You know, the initiation point, I mean, I really need to go out there and speak to some of the big Kabaddi legends who can actually change up that rule a little. At least finish
that point, or rather award that point to the defender who's finishing the tackle. You know, even if you don't give an assist tackle, because that might be, very tedious work, because everybody will come in and assist one or the other time. Right corner has gone in. Saktivel Thangavelu has gone out of the end line. That is not his comfortable place. I've been telling about that time and again. In the left corner, he feels very, very comfortable. ये प्रेशर वाला मुकाबला है। नवीन पहले राहुल राठी और अब शक्तिवेल। देखिए यहाँ पर वो हल्का सा पीछे चले गए और तुरंत वहां पर एंडलाइन एम्पायर ने कहा कि शक्तिवेल आप पीछे आ चुके हैं। हालांकि बता दें एक बार फिर से हमारे दर्शकों की, एक हाफ में एक रिव्यू यहां पर दिया जाता है टीमों को। अनसक्सेसफुल रिव्यू अगर जाता है तो वहीं समाप्त हो जाता है, अगर सक्सेसफुल होता है तो आप लगातार उसका उपयोग कर सकते हैं। अब विश्वास सलमान यहां पर राइट कॉर्नर पर कौन खेल रहा है, क्योंकि अभी वहां पर राहुल राठी मौजूद नहीं है नवीन, तो रोहित राठी हमें शायद खेलते हुए नजर आ रहे हैं राइट कॉर्नर। And see, this is the time where Vishwasalam should have actually gone in. He should have gone. अगर बोनस ले सकते हैं वो। No, that's fine. I'm saying, if he had gone in and attacked the right corner, that is what he needs to do. Because when you don't have Rahul Rathi and when you're having Rohit Rathi, a raider standing on the right corner, you need to revive your men back. And Vishwa very safely just gets a bonus and comes back. And that is not supposedly what he has to be doing. Now can he go in? No, not Dinesh Murthy. Right there, sending him. Look at that. He turns around to be a left raider. He can raid from both the sides, Dinesh Kumar Krishnamurthy. He's turned out to be a left raider. He's confident of the bonus. He's got it. Got it again. First time Palani Tuskers. I think I've got the lead. और देखिए यहाँ पर दोनों रेडर्स थे, क्योंकि राइट कॉर्नर पर अंकित शारवा और रोहित राठी, तो दिनेश की प्लानिंग जरूर अच्छी थी कि वहां पर उनके नीचे से बोनस चुराएं, और अगर अटैक करने आए तो उन्होंने इतना तेजी से जाने का प्रयास किया था कि निकल जाते, बट यहाँ अंकित बहुत ज्यादा डीप चले गए थे नवीन। उन्हें पता था कि अगली रेड जो है वो डू और डाई आएगी, इसलिए इसमें प्रयास करना बेहद जरूरी था। Actually, that's why he went in, but he should have attacked Tamlarasan Kalasamy. He was trying to go through with the bulldozing action, but Tamlarasan did not even come in for the dash. So he, I think, has unleashed his weapon of dash just a second earlier, I felt. Should have just had that timing of the bulldozing way to go out there. But Ajit, I still now feel Tamlarasan Kalasamy is better in the right corner and put Shaktivel Thangavelu on that left. I mean, at least that sort of an adjustment. Palani Tuskers needs to think about that. Rajkumar, of course, will be worried, saying if the Raiders are going down and the covers, if they don't perform, then what's the problem? Yeah, where Tamlarasan once again comes into his left corner position. Ajay Muthaya, I think, is ready for the dash against Milan Dhaya. This is Milan Dhaya who's raiding. Vishwasalam has finished his raids and gone back. Yeah, Milan Dhaya comes out with an empty raid. दोनों ही टीमों का डिफेंस देखिए कितना कमाल खेला है। शुरुआती 11 मिनट यहाँ पर होने जा रहे हैं, और वैसे ज्यादा बोलते हुए हमें ऑन द कैमरा दिखाई नहीं दे रहे राजकुमार साहब, बट क्या पीछे से बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं जब रेड लगा रहे हो? He knows where the cameras are. Rajkumar, the coach of Murthal Magnets, I think Ronak Sen would have told him, okay, listen, the cameras is not looking at you, turn over. That's what would have been told. And अभी आपको स्क्रीन पर जूनियर नवीन वहां पर नजर आ रहे थे, जो कि उतनी ही जद्दोजहद के साथ नवीन। आपसे जानते हैं क्या उन्हें भी कबड्डी में इंटरेस्ट है नवीन? क्या वो भी देखना पसंद करते हैं कबड्डी या स्पोर्ट्स? Of course, he goes out there and practices a lot of cricket, but kabaddi only for Palani Tuskers. He says whenever Palani Tuskers are on, I need to be there. But yeah, Ajay Muthaya now, can he make those changes? Nice to see young blood following the game. Because see, as we know, it took 100 years for cricket to get into Olympics. Yeah. After 100 years of Olympics, I'm not saying 100 years of cricket, I'm saying 100 years of Olympics. Now, that to 2028, not even now, 5 years from now, we will have cricket in Olympics. But kabaddi, yeah, we are eyeing Olympics for sure. Do what I read, running hand touch, he's got it. So simple and so easy because Rahul Rathi is not there on the right corner. That's a cover defender. I think that was Prince Kumar, if I'm not wrong. जी हाँ, वहाँ पर अमीश राठी साहब शायद मौजूद थे, बट फिर से देखिए दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति, वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो आपको हथौड़ा मार देना चाहिए, तो जहां पर वो कमजोरी देख रहे हैं लगातार वही वो काम करते हुए इस बार डू और डायरेक्ट थी। अजय मुथैया, समय का ये मुकाबला है, पेशेंस का, धैर्य का। रोहित राठी की हल्का सा यहाँ पर जंप आई और मिड लाइन को वो पार कर गए। Zero Jahan. That's what I keep saying, isn't it? Generally, when you have the do or die raid, that's for the raider. Yeah, he thought that he had the angle correct, but outside the back line, Rohit Rathi is very quick. Let's listen to Rajkumar now.
वो है ना उन्हें रोको ऊपर जब लकड़दा है नहीं नंबर शाबाश बेटे रोहित मार फुल कर शाबाश भाई प्रिंस राहुल ले भाई थोड़ा कट ले अच्छा फिर अपने हिसाब तक करवाएगा अटैक नहीं लगना चाहिए इसका नाम मार के ले जानता को बैंड बूंड होगा बढ़िया डाल खेल लो अपने सोनू He's worried about the defense. और नवीन उन्होंने कहा कि सोनू राठी की तरफ कोई आसानी से नहीं जाता है, वैसे ही आपको खौफ बनाना पड़ेगा। Yeah, Rajkumar also probably Rajaram there. Correction, Rajaram. He would have also said Ulla Adike. That means you just try and play end line defense. Don't try and attack the raider maybe. Yeah, nobody's going to Sonu Rati, that's for sure. That's what I said in the pre-show also, no Harshit. We needed Mari Muthuselvam. If he was there, he could have at least attacked the covers even better, more than the left raiders. Because until now, until what, 13.5 minutes, we have not seen Sonu Rati go and attack the left raiders. Now who's coming in? Sidhu Sigana is coming in. Another right raider. Okay, that's a good ploy. He can actually disturb the defense with his speed. Kuti jet. अच्छा बहुत अच्छा इंक्लूजन है नवीन ये, क्योंकि हमने विघ्नेश बाबू को देखा है खासकर चोला वीरेंस के लिए, क्योंकि वो स्पीडी रेडर हैं और यहाँ पर इनके पास स्पीडी रेडर नजर आते हैं तो वो सिद्धू सिगाना होंगे। जरूर दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति फुटवर्क बहुत अच्छा करते हैं, बट सिद्धू के पास वो स्पीड है। क्या तमिल रसन हल्का सा यहाँ पर मिलन दैया बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे। डैश अरुण कुमार का इस बार बहुत ही सेंसेशनल डैश और राजाराम साहब बहुत खुश हैं इस डैश के साथ। Brilliant dash. The only problem there was somewhere Milan Daya did not see Arun Kumar coming in. There, he was blinded. Fraction of a second, he was having his eye on Tamlarasan Kalasamy, and then Arun Kumar got that timing very right on the dash. Dinesh Kumar Krishnamurthy, I think now will take it very cool. Just a solitary empty raid. Now Sidhu Sigana coming in. I will say, just put him in the grinder of the do-or-die raid. I'm sorry I'm saying that. You know, it's not easy for a raider to come in from the bench, but you need to have Sidhu Sigana in the do-or-die raid. You cannot have Ilan Tendril or Dinesh Murthy going and taking the risk. But look at this, Rohit Rati. Brilliant hand touch on Arun Kumar. And Arun Kumar playing left cover because Ajay Mutaya is not there. चेक अच्छा टच वहां पर किया और मुरथल मैग्नेट्स के रेडर्स को नवीन पसंद है 6-7 के डिफेंस में यहाँ पर रेड लगाना। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्य किया। दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति जरूर नाखुश थे, बट यहाँ पर डू और डाई रेड है। और जैसा अभी आपने कहा था नवीन, शायद इसी वजह से उन्हें बेंच से यहाँ पर बुलाया गया था कि उनसे वो डू और डाई रेड लगवाना चाहते हैं, और वो भी राहुल राठी की तरफ क्या वहां पर जाना चाहेंगे, सोनू राठी से थोड़ा सा बचना चाहेंगे। I think he is going to get grinded in the grinder. That's what it looks like. Right, there. No footwork whatsoever. And he's not got the height. Kuti Jet will go down fighting. That was expected. The bench also does not look very shocked. I think they'll get a green card. I think Rahul Rati will get a green card. जी यहाँ देखिए, जब पकड़ा गया था तो हल्का सा सोनू राठी शायद वापस और आए थे, और इसी के चलते सोनू राठी को, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है नवीन, और रेफरीज के लिए अगर आप थोड़ा सा भी मार्जिन से अगर हटके तो वहां पर तुरंत ग्रीन कार्ड आ जाना है। आज अक्षय देसाई ने बिल्कुल यहाँ पर ये मापदंड को सही किया है। और नवीन, अगर आप शुरुआत में अगर ऐसे मापदंड को सेट कर देते हैं, बेंचमार्क को सेट कर देते हैं, तो आने वाले समय में खिलाड़ी इन सब चीजों से बचना चाहते हैं कि चलिए ऑन द स्पिरिट वहां पर गेम खेलें। Yeah, definitely. There is no doubt at all. Even it's important for the referees to set up that expectations very correct, saying, listen players, we are not going to punch down for your appeals, and we will not be letting go any foul play from you. And it's very good to see that Akshay Desai acting immediately. And I think that was the first time, Arshit, Sonu Rati going and attacking a left raider. Because it was Sidhu Sigana and he was looking clueless in a do-or-die raid. That's the first time he went out there and attacked him. But now tell me, Vishwaslavan, he's ran in so close to Sonu Rati. Ankle hold attempted. What is happening? Rahul Rati. We never expected the right corner will be a problem for Murthal Magnets. जी हाँ, यहाँ पर देखिए राहुल राठी बिल्कुल कंफ्यूज थे, डबल माइंडेड थे, और विश्वा बल्कि डीप नहीं जा रहे थे नवीन। वो सिर्फ यही चाहते थे कि कैसे भी अगर राहुल राठी उनके ऊपर अटैम्प्ट करने आए और राहुल राठी उसी जाल में फंसे। यहाँ पर पॉइंट मिला पलनी टस्कर्स को 11-9 एक बार फिर से। अब इस बार रोहित राठी, आज कहीं ना कहीं राइट रेडर्स को ज्यादा पॉइंट नहीं मिले, बट रोहित राठी ने जो थोड़ा सा लेफ्ट कवर को एक बार शिकार 2 बार लगातार बनाया है। क्या इस बार शक्तिवेल को टच करने का प्रयास करेंगे? जरूर कोशिश की थी, बट वहां पर कोई भी उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है पॉइंट्स के रूप में। Yeah, his escaping skill of whether it is in the left corner or the right corner of Shaktivel Thangavelu is very good. He literally sleeps on the mat. He just escapes all those kicks and toe touches. He sleeps on the mat, and the only raider in the family for him, all 3 of his brothers
are raiders and he's the only defender in the family. So he needs to do that. Ankit Sharma now, do what I read. And look at Shaktivel Thangavelu. Look at how he's literally sleeping on the mat. There. That's what I was mentioning about on that left corner. Literally sleeps. And he is very, very comfortable on that left corner. Time running out. Ajay Mutaya, come on. Second time. 1 point. Error. The time was running down. It was last 10 seconds. I think he expected somebody to come with him. Nobody came. और नवीन पहले शायद तमिल अरसन को वहां पर आना चाहिए था, उसके बाद अजय मुतैया को वहां पर जाना चाहिए था, पर तमिल अरसन ने बहुत समय लगाया वहां पर राइट कॉर्नर पर. किसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि अंकित बहुत ज्यादा डीप चले गए थे. नवीन, What am I seeing this? Why am I seeing this? By the way, forget what am I seeing. I'm saying, why am I seeing this? Rohit Rati, Milan Daya, they were the ones who were playing correctly. They have been substituted out. What is this? Why is Akshay Kumar coming in? I mean, of course, Rajiv Bhatia, Akshay Kumar is the Kiladi, but not this Akshay Kumar on this semi-finals. And, okay, I understand. Okay. I'm not able to wrap my head around this. Amit Rati on the right corner. That's it. I mean, I generally don't get perplexed on a kabaddi mat. I have all the answers apart from the mathematics question paper. This is tougher than the mathematics question paper now for me with whatever Rajkumar has done. सच में यहाँ पर ये जो स्टेप है ये किसके चलते उठाया गया. अक्षय कुमार देखिए नवीन हमें बहुत कम खेलते हुए दिखाई दिए और देखिए बाकी खिलाड़ियों पर भी प्रेशर पड़ता है. नवीन, जिस तरह से आपके साथी रेडर अभी अक्षय कुमार के तौर पर बुलाया गया, यहाँ पर अंकित पूरी तरह से परप्लेक्स हो गए. राइट कॉर्नर की तरफ से उन्हें बहुत इजी टैकल लाया. No, now tell me, where is Rohit Rati? Only Rohit Rati was getting you your points, isn't it? Ah, come on, Rajkumar. The coach, I think, has missed out a big trick. You should keep your players going with the same momentum. Do what I read. Dinesh Kumar Krishnamurthy. What an escape! Fabulous escape that was. Sonu Rati and I think the right corner. Both of them, is it? No, only one. Sonu Rati escapes. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाफ वे साइड डुबकी वहां पर लगाई देखिए दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति. और आपको सेटअप नहीं पता है, राठी साहब आप पहली मर्तबा आए. राइट कॉर्नर के राठी साहब की बात करें, उन्होंने पहले पल्ली. अब चलिए रोहित वापस आए तो अक्षय को क्यों एक सेकंड के लिए अंदर बुलाया गया था? एक रेड क्या उन्हें दिखाना चाहते थे आप? ये तो वही बात हो गई कि आपके बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे मेला देखकर आना है और सिर्फ आप उन्हें दिखाकर वापस बुला लाए. थैंकफुली मेले में खो गए नहीं वो अक्षय कुमार. थैंकफुली Kicks. They're managing it well, Rohit Rati. Okay, I think the toss was won by the Murthal Magnets. Has he crossed? Yes, he has. That is the power of Rohit Rati. You can't be putting him off the mat. और नवीन जब वो जा रहे थे सबसे पहले उन्होंने कोच की आंखों में मिलाकर देखा है. Yeah, totally. I think he just went out for some little small breather. 4 point. Super duper red, that is. I think they will challenge this, the Palani Tuskers. They will definitely want to challenge this. The right cover came in strong. It was almost very close. Rohit Rati. The moment he came from the bench, just that 1 or 2 seconds. No, your challenge is... Oh, Sidhu Sigana. Someone else, please. Oh, they're saying time up on the second ages. They're saying the 30 seconds were over. No. Kishore is asking 2 or 3 points. No. He's saying the time is over. Oh, God. Our decision 4 points. Please review. Right, I think we need to go back to all the original footage of where the clock was. I think they'll have to go back and see where the clock was. The review is very clear. They're saying 30 seconds is over. That is what they were saying before he crossed the midline. Anti-dash from Rohit Rati. He was pulling Tamilarasan's jersey. He's crossed the midline. I think 3 points for sure, not 4. 3 points for sure. But what is the review of the Palani Tuskers is... Oh, even Dinesh Kumar agreed to whatever it is. The review says 30 seconds is over. Right, that is an interesting review. If they can go back and see for where the 30 seconds was of the raid, if it is finished before crossing the midline, then it is a point of contention. I'll have to see that very importantly, but
How do we see that? I mean, I think the TV umpires and the officials need to go to some original footage of how the raid was conducted and then see the clock. I mean, that's the only way. I think the decision is something is coming in. अच्छा निर्णय आ रहा है। अगर ये निर्णय कहीं पलनी के पक्ष में गया नवीन, बट रिव्यू अनसक्सेसफुल। यहाँ पर 4 अंक मिल जाएंगे और पहले हाफ की ऐसे समाप्ति होगी शायद किसी ने सोचा नहीं था। रोहित राठी एक समय के लिए बाहर गए, सिर्फ 1-2 रेड के लिए वापस जब अंदर आए तो समीर रसन यहाँ पर अटैक करने गए, बट उन्हें एंटी ब्लॉक किया और एंटी ब्लॉक करने के बाद 3 और डिफेंडर को अपने साथ ले गए वहां पर रोहित राठी। Yeah, Rajaram is saying 30 seconds is over. That's what he wants to talk. He is not happy. He is definitely not happy. He wants to have a discussion with the officials. Now, this is valid. They can go out there and discuss it. He needs to talk to Mr. Jagan Mohan. If he can get the eyes on the main chief referee, Mr. Jagan Mohan, he is very, very experienced. He is a very correct man. There, Rajkumar, correction, Rajaram is talking to Mr. Jagan Mohan. 30 seconds is over, is what the call is. That's what they are discussing about. As we will come back and tell you what exactly has happened. Tackle points 4 and 5 on the other side. The next plate will show us how that is, but the 4 points has been given and the Murthal Magnets lead the first half by 1 point, but that is now been actually conversated. Right, let's go to that next plate and see how many opportunities both the teams got. Rajaram, I think he's accepted something. 14 attempts for the Palani Tuskers, out of which they've converted only 5. And nothing to choose between the Raiders, Arshit. As simple as that. We will also take a short little break and come back soon. एलिमिनेटर के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। सो गॉड वर्चुअल सेमीफाइनल यहां पर खेला जा रहा है। एलिमिनेटर नंबर 6 जो यहां इस मुकाबले को जीतेगा फाइनल में अपनी टिकट को पक्का करेगा और अरावली एरोज के विरुद्ध कल सुबह आपको 11 बजे भिड़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी टेलीकास्ट यहां पर 10 बजे शुरू हो जाएगा। यहां बात करें कैसा रहा है पहला हाफ, जरूर यहां सोनू राठी ने शुरुआती टैकल्स अपने नाम किए, 2-3 टैकल पॉइंट बहुत अच्छी तरह से अर्जित किए। उसके पश्चात दोनों ही टीमों के डिफेंस में थोड़ा सा आपको कुछ गलती करते हुए नजर आए, पर दोनों ही टीमों के रेडर्स और डिफेंडर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से मिला जुला प्रदर्शन अभी किया है। कौन सी टीम अब बेहतर मेटिकुलसली समझ पाएगी अपनी बारीकियत के साथ अपने चीजों को जो उन्होंने गलती की है, और कौन यहां पर रेडेंसियस परफॉर्मेंस करके मैच ले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही टीमों का डिफेंस सर चढ़कर बोल रहा है। अब रेडर्स को यहां से स्टेप अप होना होगा सेकंड हाफ में। सिर्फ पहला हाफ समाप्त होते होते यहां जगमोहन साहब कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ नवीन शौर्य हैं। Yeah, thanks Arshit. That is the discussion. The chief referee Jagan Mohan is still discussing with Rajaram. He's a very, very experienced chief referee. And Rajaram is still conversating, saying that 30 seconds is over. When he was crossing the midline, he says the 30 seconds was over. But Jagan Mohan is trying to explain that, listen, I have seen the footage. My call persists. That's all he says. Yeah, which we need to accept it. I know you will be unhappy. I know you will be, looking at the situations there and saying, oh, no, 30 seconds got over. But when Jagan Mohan, the chief referee, says that I have seen the footage and you need to carry on, I think the team has accepted it. Ankle hold! Do they need that? It's a Veera super tackle that's happening in. No, don't do the crisscross. Right, wonderful. Wonderful Veera super tackle. There was a defender who came in
I think that is. Oh, look at the arena. The Fatima College Indoor Stadium is erupted. I think Vijay came in, if I'm not wrong. Yes. सिद्धू सिगाना ने डाइव लगाई है नवीन. सिद्धू सिगाना लेफ्ट कॉर्नर पर इतनी मजबूत उन्होंने डाइव लगाई. नंबर 3 जर्सी लेफ्ट कॉर्नर पर नवीन. विजय को जरूर अंदर बुलाया गया था बट वो राइट कॉर्नर पर थे. मुरथल मैग्नेट से चाल जरूर सही चली थी बट वो चाल उनके ऊपर उल्टी पड़ गई. नवीन क्या शानदार वीरा सुपर टैकल किया और हैट्स ऑफ पलनी टस्कर्स. पिछले 3-4 मुकाबलों में जो उन्होंने 7-8 सुपर टैकल दिखाए हैं हर एक सुपर टैकल लगता है पिछले वाले से बढ़कर है नवीन. Yeah, totally. Let's go back to that super tackle again. I don't think so he'll get a point in this raid. He will want to go safer. Let's go back to that super tackle. Yes, you said very correct. The strategy was right to go towards the raider, Sidhu Sigana. What a diving ankle hold that was. Oh my God. And the first raid of the Murthal Magnets, because they won the toss, they had the opportunity to raid first. And they wanted the all out, but did not get it. Vijay has come in. And Sidhu Sigana is there. Ajay Muthaya is there. So 3 defenders. Does Rohit Rati challenge 3 top defenders? I'll say Sidhu Sigana also is a defender because the way he put in that super tackle. Whenever it's possible, we will go to that visuals. And this might be a very important raid. If he does not get at least a bonus point, I'll tell you, the next raid will be a do-or-die raid for Sidhu Sigana. Kicks! Rohit Rati is saying no. Sidhu Sigana never ever fake claims. Never fake claims. Fatima College Indoor Stadium is with Sidhu Sigana. What is the decision? Raider safe, 1 point. Akshay Desai says Murthal Magnets want to challenge this. All right. Action about to unfold in the TV umpire's cabin. Brace yourself guys, brace yourself. ये देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिव्यू यहाँ पर साबित हो सकता है. सुपर रेड के बाद पहली मर्तबा पलनी टस्कर्स आपको लीड में नजर आ रहा है. रिव्यू बर्बाद ना हो जाए मुरथल. No touch point. Our decision 1 touch point. Please review. चलिए देखते हैं. सिद्धू सिगाना अक्सर बहुत ही ईमानदार खिलाड़ियों में से एक है. बहुत ही ऑनेस्ट वहां पर वो दिखते हैं हमेशा. और यहाँ देखते हैं क्या वो टच कैसे किक पर आया था. Harshit, it's looking very clear. I mean, I know he's a Kuti jet. I know it's very short. But look at the right leg of Rohit Rati. It's way outside the bonus line. He immediately jumped up. And we have never seen Sidhu Sigana fake claiming anything. And the decision is in favor of Sidhu Sigana and Palani Tuskers. And they would need concrete, confirmed evidence to go out there and change the decision. यहाँ पर देखिए जारी है. ये यहाँ पर जारी है. इस एंगल से हम ज्यादा बेहतर देख पाएंगे कि क्या वहां पर एक बढ़िया टच था. निश्चित तौर पर यहाँ पर वो जो किक है वो बहुत ज्यादा अंदर गए थे और रोहित राठी सही समय पर अपने आप को पीछे नहीं खींच पाए. Yeah, looks like he's got the kick, but in the TV umpire's cabin, you've got 2 Kannadigas sitting out there as Narsimurthy and Mohan Gowda. The decision has gone in the Palani Tuskers' favor. It looks like he's got the kick. Murthal Magnets have challenged this. Yeah, Kishore, generally look at his face. The reaction says that yes, decision is coming. Review successful. No touch point. Oh, review is successful. Murthal Magnets save Rohit Rati. And they save the review. Did Sidhu Sigana go into the lobby? Hang on. No. Thankfully. Oh, right. He was jumping around. Right. पर नवीन अगली डू और डाई रेड होगी पलनी टस्कर्स की. अब क्या रोहित राठी इस रेड में प्रयास करेंगे या फिर अगर एम्प्टी हैंडेड भी जाएं, क्योंकि पलनी टस्कर्स की सबसे बड़ी ताकत रहती है उनके वीरा सुपर टैकल. अब देखते हैं कि रोहित राठी कौन सा स्टेप यहां पर उठाना चाहेंगे. क्या एम्प्टी हैंडेड उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि अगली रेड डू और डाई होगी और 2 खिलाड़ियों में ज्यादा पॉइंट लाना मुश्किल नहीं होगा. बट यहाँ पर कैप्टन से आप ऐसी मिस्टेक करना नवीन वो आप लाजमी नहीं समझते हैं. यहाँ पर ये गलती आपको ऑल आउट की तरफ धकेल रहा है. And the arena also is quite with Ajay Muchaya's problems in the tackle. Substitution, Palani Tuskers. Yeah, now they're bringing in Vishwas 11 for the raid, for the do or die raid. Yes, it's 15 all. And Ajay Muthaya today has just 1 tackle point. And I think 4 errors. 4 errors and 1 tackle point. He will want the bonus first in a do or die raid. Ankle hold problem. What is happening here? Akshay Kumar, it's a bonus +1. That's number 25. And what? No bonus. Right, no bonus. Where was the bonus? I thought there was a bonus already. No, he was cutting the bonus line. Good decision. Very good decision from Akshay Desai. Only 1
on the review. नवीन लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अक्षय कुमार आप रेडर हैं, आपको रेडर के तौर पर अंदर बुलाया गया है टीम में, इन पर आप वहां पर खड़े हैं और अगर आप बाकी रेडर्स से पूछें कि आज कितना मुश्किल है एक एक पॉइंट लाना नवीन, तो शायद रोहित राठी अंक के 4 व मिलन दहिया बता पाएंगे और उतनी आसानी से यहाँ पर डू और डायरेक्ट में वहां पर पॉइंट दे दिया। बट रोहित राठी ने अटैक करने का प्रयास किया पर बचा लिया वहां पर अपने आप को पलनी टस्कर्स के 3 डिफेंडर्स ने। नवीन अटैक किस पर, that too also on a raider. He wanted to attack Vishwas 11 in that left in position. He wanted to take the raider out. No touch point. Right, I think they need a big changeover now. Vishwas 11 should come out there and probably do something what Jambavan Jayasuriya did. Multiple point raid and the momentum will get shifted. That is what they'll be hoping for. नवीन एक और चीज बहुत अच्छी नजर आई है कि शुरुआती 10 मिनट के बाद सोनू राठी की तरफ कोई भी रेडर जाते हुए नहीं नजर आया, यानी कि उन्होंने शुरुआत में 2-3 टैकल पॉइंट जो अर्जित किए थे उसके बाद कोई उनकी तरफ नहीं गया है। That was what even Rajkumar told, isn't it? And that's what even we also told probably in the pre-show. But also in the pre-show we said something else. We also said Rohit Rathi, the left raider, will cause problems because the right corner is very weak for the Palani Tuskers. I'm not saying the defender is weak. You know, Saktivel Tangavelu on the right corner is not the right position for him. That's what it looks like. Sidhu Sigana, he needs to try out something. He can't go empty-handed. And we need to go back and see that super tackle from Sidhu Sigana. We're waiting for that. You know, we want to see how that super tackle happened. Do what I did. Right, Rohit Rathi. नवीन क्या तमिल अरसन की तरफ ओ तमिल अरसन अकेले खड़े हैं वहां पर। पहले ये दोनों चेन में खड़े थे, जब राइट रेडर आए थे वहां पर चेन में थे, यहाँ पर सिद्धू सिगाना और विश्वा वहां पर चेन पे है। नवीन क्या तमिल अरसन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं? ये है एक और वीरा सुपर टैकल, द पावर ऑफ पलनी टस्कर्स। ये मैच बना देती है वीरा सुपर टैकल में इस मुकाबले का दूसरा। Yeah, totally. Raider out. 2 points. Veera super tackle and the moment, you know, Tamilarsan Kalasamy missed that tackle. Look at who came in. Sidhu Sigana. And also Tamilarsan held the ankles. And once the defender gets up, I think the Raider has no chance. Once he gets up and when the defender is falling on the mat and on you as a Raider, you have some chance. But when he gets up, that's it. I think that is the end of the Raider there. Now, do what I raid. Vishwas 11 in the defense of 5. He does not know what to do. Actually, there's no plan. There's no escape route. He stepped into the lobby. He has stepped into the lobby. It's Raider out. Yeah, he has stepped into the lobby. Very clear. 1 point. Murthal Magnet. जी राहुल राठी की तरफ वो जाना चाह रहे थे जब उनका पैर लॉबी के बिल्कुल उनकी हील जो है वो चली गई थी और वहीं पर वो आउट करार दिए जा चुके थे। ये देखिएगा यहाँ पर अगर आप जब उनका लेफ्ट फुट राइट फुट देखते हैं तो बिल्कुल वो लॉबी में जाता हुआ नजर आया बिना टच के और वैसे भी यहाँ पर वो टैकल हो गए। बट नवीन एक बार फिर से पलनी टस्कर्स यहाँ पर जो लगातार 3-4 के हाउस में खेलने की जो इनकी स्ट्रेटेजी वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शायद डिफेंडर भी कहीं रिव्यू नवीन गवा ना जाएं। Wrong decision, totally wrong decision to go for the review on that. It was very clear evidence that Vishwas 11 stepped into the lobby, but they're also contesting to see if any other defender went out into the lobby. Rahul Rathi, where is his legs? The question is there. Rahul Rathi is very safe. He is very safe. Vishwas 11 has gone into the lobby and Palani Tuskers will lose their review. What were they thinking? Don't they know the new rule? The law is very clearly suggested that, listen, when the raider steps into the lobby, that's it, it's all over. You can't do a Pavan Sharawat here in Madurai. That can happen only in that country where the Asian Games happen. All that confusion existed there. Not here in the Yuva Kabaddi series, Matt. जी ये CARS24 युवा कबड्डी सीरीज है 1 each point। क्या एक डिफेंडर का लॉबी से शायद बाद में कांटेक्ट छूटा नवीन? सोनू राठी क्या पूरी तरह से हवा में चले गए थे? फिर से पूरी रेड यहाँ पर समाप्त होते होते देखते हैं। यहाँ जब सोनू राठी यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है तो 1 each point। Jersey number 17 in 25 I think I forgot to say in my books. I should have said my books. Sorry. Whenever the review happens, I think the end line umpire might have raised his hand where the right corner defender Rahul Rathi stepped out. Maybe. That's the only contention. If not, then nothing else.
और रिव्यू भी बचा है नवीन, Yeah, I पलनी के know. पास रिव्यू भी कंटिन्यू रहने वाला है। चलिए अच्छी बात है, अभी फिर से 19-16 का यहाँ स्कोर आ चुका है। अंकित शर्मा यहाँ पर रेड पर हैं। नवीन सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद थे पलनी टस्कर्स की, पर जिस तरह से उन्हें रोबस्ट परफॉर्मेंस वहां से दर्शाया, 2 खिलाड़ी थे सिद्धू सिगाना के, वो लगातार हम सुपर टैकल की बात करें, बहुत ही शानदार उन्होंने तर्ज के तौर पर वहां पर शिकार बनाया था अंकित शर्मा का। और उसके बाद 4 खिलाड़ी मौजूद है, 3 अंकों की लीड पलनी के पास है। मिलन दहिया वापस अंदर आए हैं, शायद अक्षय कुमार बाहर जा चुके हैं। Correct. Think so. That is what it is. And Rajkumar, I think, brought out Milan Daya for giving him that bit of a rest that was needed. Dash! And yes! Raider out. Raider out. Wow! Tamlaras and Kalasamy here to the Fatima College Indoor Stadium. 1 point. Wow, it's erupted. And Rajaram has done the longest Thai-Fi ever that I have seen. Wow! He is also pumped up. जी हाँ, क्या कमाल की लीड मिलन दहिया, एक बार फिर से बहुत ज्यादा डीप जाने का प्रयास था उनका, शायद कोच की तरफ से यही मैसेज थे, बट एक बहुत ही अच्छा डैश नवीन तमिलरसन। जिस प्रकार से ये खिलाड़ी पिछली बार डैशेस में बहुत ज्यादा मास्टर नहीं था इन्हें, बट यहाँ पर डैशेस में बहुत अच्छा किया है। वेस्ट होल्ड तो इनका सबसे बड़ा सिग्नेचर मूव है ही है। एंकल होल्ड धीरे धीरे अच्छा करने लगे और इम्प्रोवाइज कर आए हैं, इम्प्रूव्ड होकर आए हैं डिफेंडर दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति। 4 अंक लिए, ये अब थोड़ा सा पलनी टस्कर्स के मोमेंटम को स्लो डाउन कर सकते हैं रेड्स में, क्योंकि डिफेंस इनका बहुत अच्छा कर रहा है। मुर्तल मैग्नेट्स लगातार पलनी को डू और डाई रेड पर खिलाने का प्रयास कर रहा है। क्या सिद्धू सिगाना जाएंगे या फिर दिनेश जाएंगे, देखते हैं। Yeah, after this do or die raid, I'll tell you what, we will actually go out there and see what turned the pages for the Palani Tuskers in this match. So Sidhu Sigana's super tackle. From there, Harshit, they have not got the all out. Oh, dash came in at the right time. Sonu Rathi and Dinesh Kumar Krishnamurthy knows it. जी हाँ, ये अंक भी जरूर शायद अमीश राठी को मिलेगा, बट वहां पर सोनू राठी ने काम किया है। अन्यथा दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति तो इस डू और डाई रेड को डू कर जाते और अपनी टीम के लिए अंक ले जाते, बट सोनू राठी का एक बहुत ही अच्छा असिस्ट आया, एक बहुत ही पावरफुल डैश आया। लोअर बॉडी पर वो डैश जरूर था, बट पूरी तरह से वहां पर नीम को हिलाकर रख दिया था। रोहित राठी नवीन शक्तिवेल वापस अंदर आ चुके हैं, इनकी पोजीशन पर अटैक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जानते हैं दोनों कॉर्नर्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, तमिलरसन और शक्तिवेल। Harshit, if you look at what is the setup, only Sidhu Sigana is a raider there. And they are playing with their defense. And Rohit Rathi is struggling because this defense is not giving him points. Now, can we go out there and see Sidhu Sigana's super tackle? Because that is the turning point of the first raid of the second half that happened. And for 10 minutes, you know, Palani Tuskers are playing only with 3 or maximum 4 defenders. They're not even playing with 5 defenders. I think Sidhu Sigana will put in an empty raid. I think this is the right time for us to slot in that super tackle that is needed. There it comes. And a diving ankle hold. Wonderful work. And let's cut back to that diving ankle hold again in a do or die raid now. There's Ankit Sharma. From that time, Arshit, Palani Tuskers have played only with 4 defenders on the mat. Not more than 4. And he's struggling. Come on! I just appreciated Sidhu Sigana. What was he trying to do? He can't dash. He's not got the body and the physique to dash a raider. Guys, Kuti, he should have been Kuti. जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हुई है, टू और टाई रेड थी और अंकित बड़े प्रेशराइज लग रहे थे वहां पर, लगातार प्रेडिक्टेबल उनका फुटवर्क हो गया था। बट एक बार भी लीड होगी ना, मैच हम दे देंगे, ठीक है। राइट खेलना तक आजा करिए ना, बोनस चलिए भी ज्यादा कोई बात ना, उड़ तो टूटा होगा, साइड सुइड ना है, बेटे बेटे नुआ टूटेंगे, कुछ ना है, ध्यान रख बस। बढ़िया रोहित, what is Rajaram saying? What is Rajaram saying very quickly? யார் பாயிண்ட் கூட இருக்கா, நம்ம அவனுக்கு தான் பிரஷர், அவன் வாசல் பண்ணி உள்ளங்கட ஸ்கோர் பண்ண ஆடுவான், ஒரு டிஃபென்ஸ் கொடுத்துருங்க, சரியா ஆடிங்க. Contrasting stories again. Rajaram comes out and says, who's got the pressure? They have got the pressure. Yeah. Who needs the points? They need the points. Why are we giving them the points is the question. And that side, you know, Rajkumar comes in and says, come on, relax, don't take the pressure. What lovely contrasting stories. But yeah, contrasting defense, I should say, from Sidhu Sigana. We call him Kuti Jet. You know, Sidhu Sigana should have been Kuti instead of trying to being Chitti. You know who Chitti is, right? रोबो? Yeah. जी हाँ, चिट्टी निश्चित तौर पर हमारे रजनीकांत साहब की वार्तालाप हम करते हैं और क्या कमाल का उन्होंने उसमें रोल निभाया था नवीन ने, और वैसा ही रोल अब यहाँ पर पलनी टस्कर्स के डिफेंडर्स और मुर्तल मैग्नेट्स के डिफेंडर्स को निभाना होगा जरूर। बहुत समय के बाद वहां पर एक राइट रेडर आए थे नवीन,
शक्तिवेल जो कि सोनू राठी की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर इस राइट रेडर ने एक बहुत ही कमाल का टो टच किया। तमिल अरसन बहुत समय के बाद नवीन बाहर जाते हुए, फिर से 2 डिफेंडर बचे ऑन द मैट। I think he was tired. He was completely tired. He was looking at his eyes. Look where he was looking. Tamilarsan Kalasamy was looking the shoulders and the hands of Ankit Sharma, not the legs. It's a do-or-die raid. They will give him that bonus point. They are okay to give the bonus point. Yes. Bonus point. He will run back. They will try it out in another Veera super tackle situation. Ankit Sharma, I'll tell you what, Harshit, he needs to take it slow. Yeah. Unless and until he gets the angle right, he does not have to attack. He's trying now. It's not easy as it was against Tamilarsan Kalasamy because Shaktivel Thangavelu is very good in escaping. Look at that. Ankle hold, all out after a long time. That's the all out. Murthal Magnet. After 12 minutes Tuskers. of a tantalizing time of escaping the all out, the defending champions have been pushed to the all out. जी टेनिशियस टैकल के लिए यहाँ पर जाना चाहते थे, जरूर जब निगाहें थी अंकित शर्मा की वो वहां पर राइट फ्लैंक की तरफ थी, सही पोजीशन को चूज किया था, बट शायद वो बटरी हैंड्स नवीन, थोड़े से बटरी हैंड्स, और अंकित ने जर्क किया अपने एंकल को। बहुत समय के बाद मुरथल को ऑल आउट यहाँ पर मिला है, बट ज्यादा बढ़त अभी भी नहीं है, सिर्फ 2 अंकों की बढ़त मिली है, बट वो जो मानसिकता है वो शायद थोड़ा सा यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स ऊपर नजर आएगा, बट विश्वा के अपनी टीम के लिए पॉइंट ला पाएंगे, ये फायर अप कर पाएंगे। Correct on the psychological effect. Also, think about this, Arshit. The entire Palani Tuskers Raiders are completely on the bench until now. They would have got the much needed rest, but the blood is not pumped high. The adrenaline rush should have been there. Lovely dash. जी ये ब्लड स्वेट और हार्ड वर्क की लड़ाई है, और इस बार लेफ्ट कवर अटैक करने आए। देखिए नवीन, ये अच्छा अटैक था। राहुल राठी ने भी जब देखा कि लेफ्ट कवर अटैक करने आए हैं, दोनों एंकल्स पर उन्होंने डाइव लगा दी। ये वो प्रॉपर फॉर्मेशन होता है। नवीन, क्या इतनी जल्दी स्ट्रेटेजी टाइम आउट, क्या सही समय देख रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ से तो अगर पौने 7 मिनट बचे பாயிண்ட் யாருக்கு பிரஷர் மச்ச 6 நிமிஷம் மேட்ச் இருக்கு, 7 நிமிஷம் மேட்ச் இருக்கு, சுத்தமா 7 நிமிஷம் மேட்ச் இருக்கு, 3 பாயிண்ட். இத பாயிண்ட் பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நம்ம மேட்ச் நம்ம கையில இருக்கு, இன்னும் நம்மலாம் இருக்கு, நீங்க மட்டும் கான்ஃபிடன்ட் இல்லங்க. சரியா? வெரி குட். இத தான் எனக்கு தான் வேணும். சரியா? அஜய், அஜய் இங்க பாரு கவனிடா. சப்போஸ் சேஞ்ச் வேணா தரணி வேண்டா கொடுப்பேன், ஆனா அப்ப சாடுது இந்த மாதிரி வேண்டா இருக்கட்டும். ஆனா சேஞ்ச் வேணா அவன் சரியா ஆடிக்கும். Right, it's all pep talk and boosting up the confidence of the defense. That's what Rajaram has done. What is Rajkumar saying? I think these are some of the wonderful high-speed footage that we have. This is on ultra slow motion as well, as they call it. But yeah, high speed is a very technical term. But yeah, Rajaram said you just have the ultra patience in you. It's not the ultra slow motion that they need, it's the ultra patience. And he also said one point. He said, if you need Dharnidharan Kandasamy, I will bring him in. If you need Raiders, Ajay, you take a call, I will bring him in. But wonderful और आने वाले 6.5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, खासकर अजय मुथैया के लिए। वो कैसे यहाँ पर टीम को लीडअप करते हैं, ये जरूर बहुत ही शानदार दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर। हमारे फोटोग्राफर सेंटीफ्लिक्स का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ऐसे वीडियोस, मोन्टाज, पिक्चर्स हमें ऑन हाई स्क्रीन यहाँ पर हम देखते हैं। तो नवीन, अब अगर इस मैच की फिर से बात करें तो मैच देखिए अभी भी बराबरी पर है, क्योंकि कब पासा पलट जाए शायद किसी को पता नहीं होता। और पलनी टस्कर्स जब ऐसे क्लोज मैचेस लेकर जाती है, तब उनके अंतिम 1 मिनट में वो 4-5 पॉइंट ले आती है बड़ी जल्दी से। Yeah, very much. That is where the rampaging elephants are very, very dangerous. Right, Shaktivel Thangavelu has come in. I think this is the right time to bring in Dharnidharan Kandasamy. They need Raiders. They desperately need raid points. The Palani Tuskers and Ajay Muthaiya, he needs to decide and tell to his coach that, listen coach, I might need another Raider to come in. Rohit Rathi has done amazingly well today. Beautiful work. I think he's already, I need to check that again, maybe. He's got 7 raid points. That's good, but it's looked like big work. 7 raid points is looking like almost 14 raid points. So much of work he has to put in. Ankle hold, and he has been tackled. Oh, Shaktivel Thangavelu attempted the ankle hold, and the cover defense came in very, very strong to block him off. या शक्तिवेल की चंगुल से तो एक बार बच गए थे, शक्तिवेल की चंगुल से तो यहाँ पर बच गए थे, और अक्षय देसाई वहाँ पर हल्का सा कोई भी आर्ग्यू होता है, रिव्यू चाहिए, बट यहाँ पर अजय मुथैया ने इस बार अच्छा काम किया नवीन, क्योंकि शक्तिवेल की चंगुल से तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया था। I always, when Akshay Desai asks like that, I always remember Nana Patekar from Welcome.
Kanda le lo. Tomato le lo. You need kanda. You need review. You need review. I'll give you. Oh, Akshay Desai. A wonderful character, wonderful human being. Ah, Sonu Rati did not go for the ankle hold. Thankfully did not plunge his hand out there. नवीन क्या थोड़ी सी टेम्पटेशन आ जाती है जब आप टॉप डिफेंडर हैं, इतनी समय से कोई रेडर आपके आसपास नहीं आया है। बट मैं 16-17 वर्षीय खिलाड़ी, नवीन इनकी एज बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 16-17 वर्षीय खिलाड़ी हैं, बट इनका पेशेंस बहुत कमाल का है। शक्तिवेल पर क्या टच हुआ है या फिर नहीं हुआ है, रेफरी का निर्णय आना शेष बचा है। लड़िए मत खिलाड़ियों। Yeah, actually, we will talk. We are here to talk. Akshay Desai, he sees something. He's seen something in his eyes, and he's explaining it out to Jay Kumar and Kishore. No. And look at that aggression. Akshay Desai is pumped up. Whether he had the touch or no, Milan Dhaiya. Raider out. Tuskers. And Murthal Magnets do not want to review this. What a point at a very, very turning moment of the match. What an escape from Shaktivel Thangavelu on that right corner. Look at how that retrieving skills is. And a do-or-die raid now. और नवीन एक बार के लिए मिलन दहिया लॉबी को भी पार कर गए थे, उनका एक पैर बिल्कुल वहां पर भी बाहर चला गया था। शायद अक्षय देसाई ने ये भी देखा वहां पर और इसलिए रिव्यू नहीं लिया गया। डू और डाई रेड है इस बार। कृष्णा मूर्ति यहां पर प्रेडिक्टेबल फुटवर्क के साथ नहीं आना चाहेंगे कि वहां पर अटैक करने जाएंगे क्योंकि डू और डाई रेड है। बैलेंस नहीं बना पाए नवीन। मुझे वो सर्कस याद आ जाता है जब वो सिंगल रोप होती है और उस पर बचाना होता है, बट यहाँ पर दिनेश का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा। You wanted to prepare a good sweet dish, but that was served to someone who does not like sweets. That's what had happened. He wanted to confuse the defense, but then he got confused, got imbalanced, rather overbalanced. Now Rohit Rati attacks Ajay Mutaya. Ajay Mutaya is turning out to be a problem for Palani Tuskers. 1 point. Murthal Magnet. इंतजार कर रहे थे रोहित, इस फ्रेम का इंतजार कर रहे थे कि हल्का सा हाईलाइन आए अजय मुथैया और वहां पर उन पे अटैक करने जाए, क्योंकि पिछली बार भी अजय बहुत हाईलाइन थे। शक्तिवेल बैकहोल्ड का इंतजार कर रहे थे। एक बहुत ही कमाल का यहां पर टच पॉइंट प्राप्त किया और अजय अपने आप को बैकड्रिल नहीं कर पाए। नवीन अब विश्वास से पॉइंट चाहिए होंगे यहां पर रेड में। बोनस का प्रयास, अच्छा प्रयास है। बोनस पॉइंट। अभी भी क्या अंकित चारवा एंकल होल्ड की तैयारी में थे, बट अच्छा किया उन्होंने हाथ नहीं लगाया। And that's okay. They don't want people coming back on the match. On the Palani Tuskers. Hang on. Late entry. Technical point. Come on. Palani Tuskers. Murthal Magnets, you can't do such things. When you ask to raid, you need to raid. That's it. Oh God, bonus. And now that technical point. That makes it 25. It's 25 for the Palani Tuskers. 1 point leading. Arshid, why such silly errors? बिल्कुल नवीन, मेहनत के कमाए हुए एक एक पॉइंट आप ऐसे वहां पर गवा नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ पर तमिल अरसन जो है वो हल्का सा आउट ऑफ बैलेंस हुए नवीन, ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ प्रेशर का करामात है। यहाँ देखिए चमत्कार को नमस्कार है और यहाँ पर स्वयं एक खिलाड़ी आउट ऑफ बाउंड चले गए। Arshid, everybody watching and also everybody playing, they now need to hold their breaths. It's not like this, it's all pressure. I think that sweaty hands, yeah, as you said, that butter in the hands, it's all because of the sweat, and that is why Tamil Arasan slipped off. Yeah, that actually aggravates when you're tensed. When you're enjoying, your palms won't sweat. When you're actually tense, your palms do sweat. And Rahul Rati says, my palm has no sweat. What a strong grip. She is shocked with that ankle hold. क्या बोनस मिला है नवीन विश्वा को? एक बार फिर से देखते हैं क्या वो विश्वा बोनस चुरा पाए थे। शायद नहीं, बॉक लाइन के बहुत ज्यादा आगे से वहां पर टैकल किया था, बिल्कुल नी पर वहां पर गए थे राहुल। சரியா இல்லனா நீ சக்தி அடிக்கல அப்பன்ஸ் இல்லனா அப்பன்ஸ் சேஞ்ச் கொடுங்க, நீ ஆடி கான்ஃபிடன்ட் ஆடு। 3 பாயிண்ட் ஒண்ணுமே சீம்ல இன்னும் 2 நிமிஷம், அதாவது 2 நிமிஷம் பாத்தீங்களா, 2 நிமிஷம் 20 செகண்ட் இருக்கு. டேய் விடுடா, போனது இப்ப ஆடு பாரு. இப்போ ஒரே ஒரு டிஃபென்ஸ் ஆடினா சூப்பர் டேக்கிள்ரா, அவனுக்கு தேர்ட் ரைட் வரும். சரியா, இப்போ இந்த தேர்ட் ரைட் வராது, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரைட் ரெண்டு யூஸ் பண்ணி அந்த 3 நிமிஷத்துல 2 நிமிஷத்துல வந்துடா. நீ மட்டும் கான்ஃபிடன்ட் ஆடிரு, நீ ஆடிக்கிறே அவன அடிச்சிடுவான். ஓகே, சும்மா தைரியம் ஆடு. All right, I have never seen Rajaram so aggressive. He's only asking Shaktivel Thangavelu, saying, listen, will you play on the Raiders part or shall I ask Dharnidharan Kandasamy to come in? And very good line from Rajaram. He said, another video. That means whatever's happened has happened. Don't talk about that. He was saying, I think Shaktivel was saying Vishwa should have got the point. Rajaram very correctly said, whatever's happened has happened. That you just leave that. But Shaktivel has said, I will also go and raid. Yeah. He's given the coach the confidence that he will go and raid.
And they are playing on the super tackle situation. 3 points is the difference. Palani Tuskers. Palani Jersey Tuskers number substitution. 9. Who's coming in? 3 out. Manigandan Sudalamani comes in. No raid a red. Saktivel wants to raid. They are pushing him to raid. Okay. डू और डाई पर खिलाना चाहता है मुर्तल मैग्नेट्स को नवीन, इसलिए बड़ी जल्दी से वापस जाकर आएंगे, यही स्ट्रेटेजी इनके लिए है। बट क्या वो पहली रेड थी पिछली वाली मुर्तल की या फिर दूसरी थी? पहली थी वो, ये दूसरी होगी नवीन। यहाँ पर भी पूरे 30 सेकंड उपयोग करना चाहेंगे रोहित राठी, क्योंकि तीनों डिफेंडर हैं, तीनों मास्टर क्लास डिफेंडर है। शक्तिवेल कहाँ खड़े हैं? इनकी पोजीशन से अटैक करने, जैसे ही रोहित राठी शायद थोड़ा सा वहां पर लेफ्ट फ्लैंक की तरफ आएंगे, शक्तिवेल बिल्कुल उनके ऊपर डाइव लगाने वाले हैं, क्योंकि राइट कॉर्नर पर अरुण कुमार है। देखते हैं कि क्या अब रोहित राठी अंदर जाने का प्रयास करेंगे नवीन। He should be smart enough to go back. Yeah. The moment he walked in, that is what was in his mind. Now the situation of the duo direct. Come on. Rohit Rathi is tired. And they're sending in Rohit Rathi again. Come on. Sonu Rathi wanted Milan Daya to go in because Rohit Rathi was struggling and tired. Has he got it in him? No! Stepping out of the end line. Saktivel Thangavelu has stepped out of the end line. That's it. Match over. And Murthal Magnets will be going through to the finals. Defending champions will lose out because of the defensive errors and Ajay Mutaya's problems. नवीन वो एक्सप्रेशन, शक्तिवेल का बाहर जाना, वो उनके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि कितनी बड़ी चूक वहां पर वो उनसे हो गई थी। बाहर एंड लाइन के चले गए और सुपर टैकल का मौका था, डू और डाई रेड थी। अब वो जो बड़ा था वो और बढ़ चुके। धरनी धरन बहुत समय के बाद आए हैं, क्या दे रहे हैं, दुरुस्त आए। 1 पॉइंट दे दिया गया है। 1 point. Palani Yeah, Tuskers. that was a do or die Jersey number 3 raid. out. Oh God, I don't see any way Wait. the Palani Tuskers will come back. Okay, Rohit Rathi, fine. Substitution. Number 9. Substitution again. Yeah, they need a defender Jersey to number stand 19, in. Dharnidharan 23 will be out. taken out. 2 points even now here will give 27. And that's it. 10 seconds. They're playing outside the back line. They are playing outside the back line. That's it. It's a do or die match. And it's a do or die situation here for the Palani Tuskers. Even if they get this super tackle on, where the clock has run out, he will not cross the back line. So that is 2 points. That's okay. That is very much okay. Rohit Rathi, for all his jahan in his life, has done a very, very smart work of not even crossing the back line. But the Murthal Magnets go through to the finals. Super tackle. And 2 points. Palani Tuskers. Rajkumar is celebrating in the aisles. He's dancing. The coach is dancing of the Murthal Magnets. Match over. Aravali Arrows versus Murthal Magnets are straight finals. Defending champions dashed out. Adrenaline rush of excitement नवीन, थंडरस्टॉर्म ऑफ एक्साइटमेंट यहाँ पर आया था थ्रिल, और बिल्कुल राजकुमार साहब का जो पूरा घड़ा था वो भर चुका था और यहाँ पर उनका एक्साइटमेंट बाहर आया है। थम्स अप यहाँ पर आया है। मुर्थल मैग्नेट्स ने भी थोड़ा ज्यादा कॉम्बिनेटिव खेला यहाँ पर, और पलनी टस्कर्स जैसा यूनिट आज उनके लिए ड्रीम वर्क नहीं नजर आया। रौनक सैन खुश है, राजकुमार साहब वहां पर खुश है, मुर्थल मैग्नेट्स के सभी फैंस यहाँ पर खुश हैं, क्योंकि ये मुकाबला नवीन एक और बार फिर से पिछले मुकाबले की तरह 2 पॉइंट नहीं, इस बार सिर्फ मुर्थल जीता है 1 अंक के साथ। बट पलनी टस्कर्स एक बार फिर से उन्होंने दर्शाया कि कैसे यहाँ तक पहुंचा जाता है। Whatever it is, it's a very, very good fight. We got the finals before the finals. That's all I will feel. Final worthy encounter नवीन, Yeah, totally. undoubtedly. It was a final worthy semi-finals. So no second thought about it. Rajaram is still discussing about the 30 seconds running down on the clock. That is what he is still discussing about. He is still not happy. And Arshit, I think that raid will be the Ease My Trip Kabaddi Kamal Ka moment of the match. That 4-pointer raid of Rohit Rathi, the first half's last raid, I think that is what will be it. और ये वो दूसरे आपकी पहली रेड थी नवीन, जहां पर वीरा सुपर टैकल किया गया। उसके बाद पलनी टस्कर्स लगातार 10 मिनट 3-4 अंक डिफेंस में भी खेला और 1-2 पॉइंट के साथ लीड पर रहा। बट उसके बाद एक बार फिर से जब ऑल आउट हुआ पलनी टस्कर्स, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। और फिर अंत में शक्तिवेल का सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में नवीन बाहर चले जाना, शायद वो वहां पर जैसे आप कहते हैं ना कि वो उस माला पे अंतिम फ्लावर था। Yeah, totally. The photo frame was just waiting for that garland, and that final flower was gone in. But also Ajay Muthaya,
Ajay Muthaiya going in and having all those issues. When you see the next play, look at that. Raids and tackle points are all okay for the Palani Tuskers. But look at the raiding there. Rohit Rati. Fabulous work. That's it. We actually spoke only about Rohit Rati in the pre-show, isn't it? Left raider will trouble the Palani Tuskers on the right corner because they don't have a right corner. And if you can see Rajaram just behind those graphical plate, he's still discussing with the chief referees out there. He's still saying the clock was not stopped, maybe because when he was doing the substitution, yeah, he's kind of searching reasons now. 24 attempts for the Palani Tuskers and 9 conversions. Yeah, there. The story actually is suggesting that one. And even if Rajaram is fighting for 1 or 2 points, it's that 1 point victory. My God, Palani Tuskers 28. And even if that was gone in, Murthal Magnets have gone through with the finals. 1 point victory. But Rohit Rati, for all that effort, that 8 points will just look 8. But it is for me a double Super 10 effort. Let's go to that CARS24 Power Raider of the match confirmation and see that tackle success rate. The conversion will be very, very low. I'm very sure about that. Yeah, let's change up that plate and go to CARS24 Power Raider of the Match award. Yeah, there. 38% conversion. As I said, it's very, very low. It's not a Virat Kohli sort of an innings. It is a Rahul Dravid sort of an innings here from Rohit Rati. Or rather, I should say it's not a Rohit Sharma sort of an innings, but it is a Rahul Dravid sort of an innings from Rohit Rati. Right. That is where the Murthal Magnets have gone into the finals of the CARS24 Yuva Kabaddi Series Monsoon edition. And Veera Kavach of the Match award. Probably the Palani Tuskers will have to settle for bronze. Probably the 3rd place. Tamilarsan Kalasamy on that left corner. 66% conversion. That's good. But the number of opportunities where the defenders lost. And especially Ajay Muthaiya. We are sorry that we are trying to pick up on one player or one defender, which should not be done. But that was very evident. The captain who did so well in Mysuru leg. Ajay Muthaiya, the on-mat captain. And who won the trophy there in Mysuru's Chamundi Vihar Indoor Stadium in the summer edition, could not do that here in Madurai's Fatima College Indoor Stadium. As we see the background, it's all getting ready for the post-match presentation. We'll see you soon after the presentation in the post-show of Yuva Live.
This match showcased the adrenaline rush of skills, excitement, and thrill. Welcome to the post-match presentation of Eliminator 6, the penultimate match of the CARS24 Yuva Kabaddi Series Monsoon Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners. First, title sponsor CARS24, travel partner Ease My Trip, secure browsing partner Vira, healthcare and physio partner Wellemal Hospital, Madurai, broadcast partner Fancode, fantasy partner Dream 11. In the presentation today, to do the honors, we have a very inspiring and a charming personality with us, Mr. Suhail Chandok, CEO of U Mumbai and Director of Elevate Sports India. Huge welcome in the post-match presentation, sir. Good to have you on board one more time. But Palani Tuskers versus Murthal Magnets. What a match! निश्चित तौर पर जब ये मुकाबला आप सभी के समक्ष आया, हम सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और एक्साइटमेंट चरम सीमा पर यहाँ पर पहुंचा। और इस मैच में हमने देखा कि कितना कमाल ये कबड्डी का खेल है और एक बार फिर से इस मुकाबले को जीतते हुए देखा मुर्तल मैग्नेट्स को, डिफेंडिंग चैंपियंस को यहाँ पर पटक नहीं खाते हुए। सीधा चलेंगे अवार्ड्स की तरफ, शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द CARS24 पावर रेडर ऑफ द मैच, जो रहेंगे मुर्तल मैग्नेट्स के, जिस खिलाड़ी ने जरूर खाते में 8 अंक जोड़े हों, बट आज किसी डबल सुपर 10 से कम नहीं था। वर्दी परफॉर्मेंस बाय नन अदर देन रोहित राठी। लेट्स हैव अ लुक एट हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। So Kabaddi is all about the relentless team game और इस टीम गेम में दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेली, बट एक अंक के साथ यहाँ पर वो बाजी मारी थी टीम ने। अब समय है वीरा कवच ऑफ द मैच की तरफ चलने का, जो रहेंगे पलनी टस्कर्स के द ओरिजिनल लेफ्ट कॉर्नर तमिल अरसन, जिन्होंने प्राप्त किया 4 टैकल पॉइंट्स और अपनी टीम के लिए बने हैं घातक डिफेंडर। आइए देखते हैं इनके शानदार टैकल्स को। और जब एक समय पहले हाफ में लग रहा था कि क्या ये मुकाबला धीरे धीरे मोमेंटम पलनी टस्कर्स की तरफ जा रहा है, तब हमारे इस खेल में देखने को मिला ईज माय ट्रिप कबड्डी का कमाल मोमेंट, जहां पर पहले हाफ के अंतिम रेड में 4 अंक अर्जित किए और किसी ने नहीं, द सुपर हिट, द वेरी वेरी सुपर फेमस रोहित राठी, वो 4 पॉइंटर रेड के साथ वहां पर इन्होंने अपनी टीम के लिए एक बार फिर से मोमेंटम प्राप्त किया। आइए देखते हैं वो जानदार 4 पॉइंटर रेड। तो ये था अद्भुत, अद्वितीय, विलक्षण, ऐश्वर्यशाली मुकाबला, जहां पर दोनों ही टीमों ने आपको खेलते हुए दिखाया विद द स्पिरिट ऑफ कबड्डी और बेहतरीन ये मुकाबला कबड्डी का चला। और यही चाहता है CARS24 युवा कबड्डी सीरीज का हर एक एडिशन कि सभी खिलाड़ियों को मिले एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो शोकेस कर पाए अपनी स्किल्स पर, जिन्होंने अनडाउटेडली डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर आ रहे थे और अपना कमाल का कार्य किया। उन सभी को एक बार फिर से फेलिसिटेट करने का समय आ चुका है। तो चलिए हम सबसे पहले थंडर ऑफ अपलॉज के साथ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे द होल टीम ऑफ पलनी टस्कर्स, प्लीज बी इन द क्यू। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे द शक्ति वेल के साथ। लेफ्ट कॉर्नर, जिनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं कि ऐसे रेडर भी यहां पर आपको नजर आते हैं, जो अपनी पूरी फैमिली में, जहां पर रेडर्स का ग्रुप है, वहां पर जाकर इन्होंने डिफेंस में अपना परचम लहराया, बहुत सारे मैचेस में अपनी टीम को जीत दिलाई। द नेक्स्ट वन इज के तमिल अरसन। We have also with us सिद्धू सिगाना, जिन्होंने आज एक ऐसा एंकल होल्ड किया, एक ऐसा वीरा सुपर टैकल दिलाया, लग रहा था कि क्या फिर से पलनी टस्कर्स जो है आगे लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं विश्वा असलवन की, एक और बहुत ही शाइनिंग रेडर, जिन्होंने बहुत ही इरिडिसेंट परफॉर्मेंस कर दिखलाया और बहुत ही अच्छी तरह से सेटअप किया है, बेंचमार्क दिया है और सिग्नेचर मूव्स के साथ दिखलाया है कि वो कितने कमाल के खिलाड़ी हैं। और चलिए धरणीधरन कांदासामी, जिन्होंने चैलेंजर राउंड में, शुरुआती राउंड में, चाहे आप सर्वाइवल राउंड की बात करें, इन्होंने लगातार अपनी टीम की भाग दौड़ को संभाले हुए था। तो धरणीधरन, and now the time for the S मणिकंदन। पिछली बार तब आपको नजर आए थे कहां पर नीलगिरी नाइट्स के साथ, बट इस बार यहां पलनी टस्कर्स के साथ खेले और इन्होंने भी अपने डिफेंस को और सशक्त बनाया। एंड द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज ए अरुण कुमार, जिन्होंने चोला वीरंस के विरुद्ध अर्जुन राठी को जो एट द एंड मोमेंट वहां पर फ्रंटल ब्लॉक होल्ड किया था, वो शायद कौन भूल सकता है। और एक और ऐसे राइट कॉर्नर डिफेंडर जिन्होंने विजय फतेह करने में अपना मेन रोल अदा किया है, वो है एस विजय। The next one we have in the queue is S. Marimuthu Selvam.
और ये ही खिलाड़ी आगे आपको आने वाले समय में बहुत सारे नेशनल्स, बहुत सारे फ्रेंचाइजी लीग भारतीय टीम के लिए खेले, हम आशा करते हैं। द नेक्स्ट वन इन द क्यू इज दामोदरन। और अब हम बुलाएंगे वी शशि कुमार, जिनको भी जब बेंच से आने का मौका मिला, इन्होंने भी अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छा खेला है और बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस किया। एलन थेंद्रल ने इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस के साथ साथ इन्होंने अपने नाम के साथ साथ जोड़े हैं बहुत सारे पॉइंट। द लास्ट वन एम अजय मुथैया, और उनके कोच को यहाँ पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आए, हम आपका तहे दिल से सम्मान करना चाहते हैं राजा राम सर एंड कैप्टन अजय मुथैया। And also a brilliant उनके इतने शानदार परफॉर्मेंस के चलते, here's now the time to bring them on with again a brilliant jack, the third prize. Congratulations Palani Tuskers, you totally deserve this। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। This is a jack and this is the third place in this CARS24 YKS Monsoon edition। Palani Tuskers, a huge congratulations to you, and we all are wishing for you a brilliant good luck for the future। So that's all from the post match presentation of Eliminator number 6। आप सभी के साथ बड़ी जल्दी मिलेंगे पोस्ट शो में, तब तक के लिए stay tuned with us। Of this match.
जब आपके जहन में हो लक्ष्य आसमान का तो फिर कद देखना आसमान का वो फिजूल हो जाता है, क्योंकि आज फिर से सीढ़ियों पर लगातार चढ़ते हुए अपने आप को पहुंचा दिया है मुरथल मैग्नेट्स ने फाइनल्स की राह पर। फिर से याद आ चुका है वो जयपुर गुलाबी नगरी का वो एडिशन जहां पर नवीन पहुंचाया था मुरथल ने अपने आप को। आज हमने प्री शो ऐसे ही शुरू किया था कि क्या आज डिफेंडिंग चैंपियंस दूसरी फाइनलिस्ट बनेंगे या फिर मुरथल मैग्नेट्स कई समय के बाद अपने आप को फाइनल में पाएंगे। स्वागत है नवीन, मैं हूं अर्षद शर्मा आप सभी के साथ। Yeah, thank you, Harshit. As we spoke, that's what happened, isn't it? Rohit Rati. We spoke about the left raider creating a lot of problems for the Palani Tuskers because the right corner is struggling. That exactly what was happening there in the semi-finals. Yes, Rohit Rati, fabulous work, and that's the score line for us. And also, I also feel that the Palani Tuskers were too very aggressive sometimes.